पुण्य सवेरा, बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
Om Shanti. गुड मॉर्निंग। Good morning. आज सभी को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो, मुबारक। Greetings and good wishes on the day of Dhanteras. आज के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं। Today's Bab Dada's sweet version. 30 मार्च 2007। The revised date was 31 March 2007. सीजन की लास्ट मुरली। This was the season's last Murli, इसमें बाबा ने बहुत सारी बातें चेकिंग करने के लिए। in which Baba has given many things for our checking. सबसे पहले तो बाबा First of all, बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। Baba is looking at the lines of the fortune of your children, रेखा, नैनों की रेखा, looking at the lines of the eyes, मुख की रेखा, the lines of the mouth, the lines of the hands, हर कदम में पद्मों की रेखा। and the lines of the fortune और फिर बाबा ने कहा कि steps ये you put. श्रेष्ठ भाग्य की रेखा And Baba is looking at the elevated fortune of your children, बाप द्वारा प्राप्त है। and that is attained through the कैसे प्राप्त किया? Father, the imperishable one, संगम युग में and how to attain it कर्म की कलम से at the confluence age भाग्य की with the elevated pen of Srimad. Baba has drawn the lines of fortune, कहते हैं। and then Baba says, संस्कार के आधार से ही according to the current sanskar, the future world will be created, संसार में and in the future राज्य world there will be one kingdom, one religion, सुख शांति और संपत्ति। and eternal progress and संस्कार prosperity. में भी देखना है कि एक राज्य है, So at the present sanskar we have to see माया का राज्य, whether there is the kingdom of the one or there is the kingdom of Maya in between. मन बुद्धि कर्म To become self-sovereign means हर जगह स्वराज्य अधिकारी है। we should claim the rights of self-sovereignty दूसरा through words, action, thoughts. एक धर्म है संपूर्ण पवित्रता। One religion is of complete purity. बाबा कहे ये भी चेक करो And therefore Baba says you have to check कि this. संपूर्ण पवित्रता का ब्रह्मचारी What is complete purity? धर्म एक धारणा हमारे। What we have to do in order to follow the footsteps of Father Brahma. तीसरा जो कहा अखंड सुख शांति, And thirdly Baba says eternal peace, happiness and prosperity. सुख इसी समय का है। The supersensuous joys of this time, सुख संपन्न बने हैं। and therefore नाम मान शान साधन सेल्वेशन के आधार पर नहीं, we have to check ourselves as how much peace, happiness and prosperity is there. It should go beyond name, form and शांति के any वातावरण popularity. स्वरूप में स्थित होना। We have to stabilize in our peace लेकिन form, शांति वाले सर्कमस्टेंस हो, and it is not a big thing that we stabilize in a peace form when it is already peace there. But while being in the atmosphere of peacelessness, we have to imbibe peace. विशेष जो संगम युग की संपत्ति है, The prosperity of the confluence age is peace, love, happiness, knowledge and virtues. संपत्ति को भी चेक करो। And therefore we have to check this prosperity, ज्ञान का the inculcation of knowledge, हर कर्म the experiment of knowledge. To what extent do I have, तक स्वयं में धारण। and how much have I imbibed the power of virtues? देखा समय की रफ्तार, Baba is looking at the speed of time, is moving बच्चों को भी very fast, पुरुषार्थी and therefore your children have to become intense effort makers. मिशन बाबा ने दी। And Baba has given the definition of the being intense effort makers to become a donor, to become a bestower, तीव्र पुरुषार्थ। not the one who takes, but the one who gives. दूसरी परिभाषा
परिभाषा बाबा ने बताई, The second definition Baba says, निर्मल वाणी, being constructive, ये तीव्र being पुरुषार्थ pure, का आधार है। and becoming humble. और फिर बाबा ने This is the तीनों basis to खाते have जमा intense करके effort किए कि कहाँ तक तीनों खाते हमारे जमा and check your stages and the treasure स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, by making सेवा effort द्वारा पुण्य का खाता, to accumulate और charity सर्व को संतुष्ट करते हुए and while making everyone content to increase the treasure of blessings. तो तीनों खाते को भी बाबा ने चेक किया। Baba checked all the बाबा ने three अंडरलाइन कराया treasures and Baba has underlined. कि अभी आवश्यकता है Now the need is दर्शन देने where we have to give our की। attention. आज के बाबा के अनमोल So we will listen to Baba's invaluable sweet version. 19 अक्टूबर 2025 19 October 2025. रिवाइज कोर्स 31 The revised course is 31 March 2007. मुरली का टाइटल है The title of today's Murli, अपनी सूरत से Be Worthy की सूरत दिखाना, and Show the Father's face through your face, निर्माण के साथ as well as being constructive in doing service. निर्माण स्थिति का Also, बैलेंस keep a balance of speaking pure words and having a humble stage. Today, Bab Dada बच्चों के is pleased to see the देख lines of fortune of the children everywhere. बाबा बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। Bab Dada is pleased to see the lines of fortune of the children everywhere. सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही The lines of sparkling है। light मस्तक में are shining on the foreheads of all the children. नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा The lines of the fortune of spirituality are visible in their eyes. मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा The lines of the fortune of elevated words are noticed coming from mouths. रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। On their lips, Baba is seeing spiritual smiles. सर्व परमात्म खजानों की रेखा On their hands, दिखाई the lines of all the godly treasures are visible. और कदम हर याद के कदम में In every step of their remembrance, पद्मों की रेखा देख रहे। Baba is seeing lines of multi-millions. हर एक के हृदय में And in each one's हृदय की heart, रेखा भी बाबा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में in each बाप one's के heart, लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। Baba is seeing a line of being absorbed in the Father's मस्तक में love. चमकती हुई ज्योति की रेखा, नैनों में Baba is seeing the lines of fortune of the children everywhere. The lines of sparkling light are shining on the श्रेष्ठ वाणी foreheads. की रेखा, The lines of fortune of spirituality are visible in their eyes. मुस्कुराहट की रेखा, The lines of the fortune of elevated words are noticed सर्व coming खजानों from की mouths. रेखा, On their lips, Baba is seeing spiritual smiles. लव On their में hands, लवलीन होने की the lines of all the godly और treasures याद are के हर visible. कदम में In every step of their remembrance, Baba is seeing lines of multi-millions. And therefore we are so fortunate ones. ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना। Baba is seeing a line of being absorbed in the Father's भाग्य की रेखाएं love. Each of you children is स्वयं experiencing बाप ने such elevated fortune, are you not? The भाग्य Father की himself रेखाएं स्वयं बाप has drawn these हर एक lines of fortune श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींच with each one's pen of elevated action. कर्म करना सिखाया, जो श्रेष्ठ
कर्म के कलम से खींची है। The Father Himself has drawn these lines of fortune विनाशी है, with each one's pen of elevated सिर्फ इस action. जन्म के लिए नहीं है। It is such elevated fortune that it is ये भाग्य की रेखा imperishable. यहाँ के लिए नहीं है, लेकिन It is not अनेक just for this जन्मों birth, की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। but these are the imperishable lines of fortune बाप है for many births. और अविनाशी The Father is imperishable and the lines of fortune are समय imperishable. श्रेष्ठ कर्म के आधार पर At this time, सर्व रेखाएं all lines are attained on the basis of your elevated actions. के आधार पर सर्व रेखाएं At this time, all lines are attained on the basis of your elevated actions. क्या होता है? इस समय का पुरुषार्थ The effort made at this time प्रारब्ध बना दे। creates the reward for many births. खाली इस जन्म के लिए नहीं है, And therefore, Baba said it is not only जन्मों के लिए for this birth, की भाग्य की रेखाएं प्राप्त but the effort made at this time creates the reward अनेक for जन्म many की births. प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों की जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, Even at this time, बाप दादा Bab Dada wishes to see the reward that all of you children are to receive for many births, पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति, that attainment of the reward for the efforts you made at this time. भविष्य में जो प्रारब्ध Now, प्राप्त होना है, बाबा कहे इस समय बाबा वो देखना चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, not just in the future, ये सब रेखाएं सदा but all of these lines have to be experienced ही constantly, even now. अब में आए, क्योंकि अभी के ये दिव्य संस्कार Because these divine sanskars of the present time are creating your new world. नया संसार बना रहा है। And because these divine sanskars of the present time यहाँ से are creating your new world. चेक करो, Check. चेक करना आता है ना? Do you know how to check? स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। You have to become your own checkers. सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती है। Are you experiencing the lines of all ऐसे तो fortune नहीं even now? समझते कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। You do not think, do you, that this reward will be visible at the end? प्राप्ति भी अब है, The attainment is at this time, and the reward also has to be experienced at this time. का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार, भविष्य संसार के संस्कार अभी The प्रत्यक्ष sanskars for the future world have to be experienced in your life in a practical way now. भविष्य संसार के What should you check? गायन करते हो ना? You praise the sanskars of the भविष्य future संसार world, में क्या होगा? of there being राज्य होगा, one kingdom in the future याद world. है ना वो संसार? You remember that world. कितनी बार Do you not? संसार में राज्य किया है? Do you remember how many times you have ruled in that याद world? दिलाने से याद आता है। Or is it that you only remember it when Baba reminds you of it? क्या थे वह स्मृति में है ना? Do you remember what it was? It is in your वही awareness, संस्कार is it not? अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। Are those sanskars in your practical life at this time? क्या ये Baba is भविष्य making के us संस्कार, realize. अभी के संस्कार प्रत्यक्ष रूप Are those sanskars in your practical life at this time? चेक करो। अभी भी मन में, Check बुद्धि में, in your mind, in your intellect, in your relationships and connections in your life. मन में, Do you have one kingdom?
संबंध संपर्क में in your mind, in your intellect, in your relationships and connections in your life. कभी Do you have के one राज्य kingdom? के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है? Or is it that sometimes along with the soul's rule, ये चेक there is also the rule of Maya? आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है? Is it that sometimes along with the जैसे soul's भविष्य rule, प्रारब्ध there is also the rule of Maya? ही राज्य है, In your future reward, दो नहीं है। there is just the one kingdom, सारे संसार में not two. एक ही राज्य लक्ष्मी नारायण का, In the entire world, there will be only one kingdom of Lakshmi and Narayan, दो तो not two. Similarly, आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का, just as in the जैसे future भविष्य kingdom, राज्य में एक राज्य के साथ फिर along with the one kingdom, there is the one संसार में religion. एक राज्य है, एक धर्म है। In the future वो kingdom, धर्म कौन सा along है? with the one kingdom, there is the one religion. पवित्रता की धारणा, What religion is that? It is the religion of the dharana of complete purity. पवित्रता संपूर्ण है। So now check, is there complete purity? अपवित्रता का नाम निशान नहीं। Let there be no name or trace of impurity अर्थात even in your dreams. पवित्रता की भी डेफिनेशन बाबा बताते, Baba is saying the definition of purity. संकल्प Purity means to have just the one dharana संबंध of complete purity एक in your thoughts, words, पवित्र actions and relationships and connections. पवित्रता अर्थात संकल्प, Purity means कर्म, to have just the one dharana of complete purity धारणा, in your thoughts, words, actions and relationships and connections. You have to be brahmachari. चेकिंग करनी आती है ना। Do you know how to check yourselves? राज्य कहाँ? मन में, बुद्धि में, One kingdom संबंध in your संपन्न mind, in your intellect, in your thoughts, words, कर्म actions and relationships and connections. हो पवित्रता। There should be only one dharana of जिसको purity. अपनी चेकिंग करनी आती है, Those of you who know how to check yourselves, raise your भी hands. चेकिंग करना जानते हैं, आती है और करते भी हैं। You know how to check yourselves. हैं, So do you also check yourselves? बाबा करते हैं। Do you? टीचर्स को आता है, Do you teachers know how to check? अच्छा डबल फॉरेनर्स को आता है। Do you double foreigners know? Foreigners बैठे, Are there anybody double foreigners sitting in the gathering? अच्छा तो डबल फॉरेनर्स को आता है, Do you double foreigners know? क्यों? Why? अभी की पवित्रता के कारण It is because of the purity of the present time पवित्र that people ask even today for purity from your non-living images. अर्थात Purity means one religion स्थापना which is established at this time and also continues in the future. ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? Similarly, राज्य what is the praise of the future? अखंड One kingdom, one religion, राज्य एक and धर्म along और with साथ में those, सदा constant happiness, peace and wealth. अखंड सुख, Akhand happiness, akhand peace अखंड संपत्ति। and akhand wealth. तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में, So in your life of self-sovereignty, स्वराज्य के जीवन में in your life of self-sovereignty, और इस समय है, the other is the sovereignty of the world. तो चेक करो But at this time, अविनाशी you have सुख, self-sovereignty. परमात्म सुख, Check yourselves, अविनाशी अनुभव, imperishable happiness, godly happiness. परमात्म सुख। Do you experience it to be imperishable?
कोई साधन व कोई सेल्वेशन के आधार पर Let it not be that you experience happiness on the basis of any means or facilities. कभी किसी के कारण से, कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। Let no wave of sorrow be experienced at any time for any reason. जो कभी भी किसी भी कारण से दुख की लहर Let no wave of sorrow be experienced at any time for any reason. शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं You do not experience happiness on the basis of name, fame or honor, कोई नाम do you? शान के आधार पर सुख अनुभव You do not experience happiness on the basis of name, fame or honor, do you? साधन सेल्वेशन Why? क्या है? Because name, fame, honor means ये स्वयं facilities are विनाशी है। themselves perishable and temporary. तो विनाशी आधार से अविनाशी You cannot receive imperishable happiness विनाशी on the आधार basis से of अविनाशी perishable supports. होता है। चेक करते जाओ, Continue to check अभी भी yourselves. सुनते भी जाओ और अपने में चेक Even now, continue to listen and also check yourselves, पड़ेगा। and you will know, क्या पता पड़ेगा? and you will ये know संस्कार और how much भविष्य difference संसार there के is कालत्व में between the sanskars of the present time आप सब and the reward of the future world. बाबा से क्या वायदा किया है? All of you made a promise to जन्म Bap से ही Dada बाप as दादा soon से as you वायदा took किया birth. है। बाबा याद दिलाते वायदा Do you remember your क्या promise? वायदा की भूल गए? Do you? क्या वायदा है? Or have you forgotten यही it? वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी You promised विश्व that all of you कल्याणकारी will बन become the Father's नया companions, सुख शांतिमय be संसार world benefactors, and become the makers of the new world of सुख peace शांतिमय and संसार happiness. बाप दादा के साथ बनाने वाले हैं। याद है अपना Do वायदा? you remember it? याद है तो हाथ उठाओ। Do you remember your promise? वायदा याद है तो बाबा Raise के your hands. पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? Is it a firm promise, or is there sometimes something mixed into it? भी बच्चों को रियलाइज कराते हुए Baba is making you children realize कहते हैं and humorously is वायदा है saying, या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? is it a firm नया promise, संसार or is there sometimes something mixed into it? आधार से बनाने वाले हैं। You are the ones who are creating the new world on the basis of godly sanskars. लेकिन पुरुषार्थ की It is not a question of only making effort at this time, भविष्य में तो है, because you must also अभी भी experience the reward at this time of the effort. तो सुख के साथ फिर है Together with happiness, एक राज्य, also check peace. One kingdom, सदा one religion, सदा शांति, constant peace and happiness. अशांत सर्कमस्टेंस, अशांत वायुमंडल, Peaceless circumstances, सागर के a बच्चे, peaceless atmosphere, सदा कमल पुष्प and in that समान, too, अशांति को भी you are the शांति children के of the ocean of वायुमंडल में peace. परिवर्तन कर You are constantly like lotus flowers. अशांत सर्कमस्टेंस, So, can you transform peacelessness आप शांति के into an साथ atmosphere बच्चे of सदा peace? कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर Can you transform peacelessness शांत into an वायुमंडल atmosphere है, of peace? उसमें अपने शांति अनुभव की If the atmosphere is peaceful and you experience वायुमंडल है, उसमें peace, अपनी शांति का that is not a big अनुभव thing. किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका वायदा है However, शांति को शांति your में promise is that you are the ones who transform peacelessness into peace. चेक कर रहे हो ना, So check, परिवर्तक
हो, You are checking yourselves, are you not? कहते आप परिवर्तक हो, Are you the पर वही तो नहीं हो transformers? ना। You are not influenced by anything, परिवर्तक हो, are you? परिवर्तक You are कभी transformers. परवश नहीं हो सकता। Those who are transformers can never be influenced परिवर्तक by anything. परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से तीसरा है In this way, अखंड wealth, सुख, अखंड शांति, limitless अखंड wealth, संपत्ति, अखुट संपत्ति, वह स्वराज्य अधिकारी की क्या है? what is the wealth of someone who is the master of himself? ज्ञान, Knowledge, virtues, शक्तियाँ, and powers. स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियाँ यह है। These are the types of wealth of someone who is a self-sovereign, ज्ञान के the सारे master of विस्तार के himself. सार को स्पष्ट जान गए हो ना। So check, you now clearly know the essence of the whole expansion of this knowledge. भाषण Do किया, you not? कोर्स कराया, The knowledge does not mean that you give courses and lectures, but knowledge means to have understanding. कहाँ होगी? हम ज्ञान स्वरूप है, उसकी अभिव्यक्ति We are the embodiment of knowledge. समझदार होकर कर। That means तो समझ, to ज्ञान अर्थ का अर्थ है समझ। have understanding. हर कर्म So every thought, ज्ञान every deed, समझ, every word ज्ञान की अभिव्यक्ति, have to be performed with understanding. समझदार, Knowledge means being sensible. Do you do everything while being knowledgeful? रहते हैं। Do all virtues remain emerged in your practical life? फिर बाबा कहे सर्व गुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। Do all virtues remain emerged in your practical life? Do you have all the virtues इसी or प्रकार only according to your capacity? In this way, है all the powers, the title of each of you is a master with all powers, नहीं, not just one with some powers. शक्तियाँ संपन्न है, So do you have all the powers to the शक्तियाँ fullest extent? और दूसरी बात, Secondly, सर्व शक्तियाँ समय पर कार्य करती है। do all the powers work at the right time? है। दूसरा, समय पर वो कार्य करती है या नहीं करती? Do all the powers work at the right समय time? पर हाजिर होती है या समय बीत जाता फिर याद? Are they present at the right time? Or do you remember them when the time for using them has passed by? एक राज्य So check all of these three things. और That is one kingdom, one religion, शांति और and unbroken peace, happiness and prosperity. तो चेक करो तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति। So you need to check this. नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव All है, of these things that you experience now at this time of self-sovereignty will not be experienced in the new world ज्ञान ही नहीं है। because there isn't knowledge. तो इसीलिए बाबा कहे And therefore Baba says, इन बातों you have to check these things. की है, अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। All of these things can be experienced अभी at से this ये time. संस्कार इमर्ज होंगे, Only when these sanskars emerge from now will they continue in the form of the ऐसे वो नहीं reward. समझते हैं, You do not कर think, रहे हैं, do you, जाएगा, that you are still imbibing them, अंत तक तो that हो it ही will जाएगा। happen, that it will definitely happen by the end. बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है Bab Dada has already given you a signal in advance कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। that your practice over a long period of time at the present time बहुत काल की is the basis of your attainment over a long period of time. अंत में हो जाएगा नहीं सोचना,
Do not think that it will happen by the हो end, जाएगा नहीं, that it will happen then. No, क्यों? it has to happen राज्य का now. जो अधिकार है Why? वह अभी बहुत काल In order to have a right to being the master of yourself, का you अभी need to बहुत काल का अभ्यास। practice it over a long period of अगर time एक now. जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते If you are not able to have a right in one birth तो अनेक and you become dependent, then how can you have rights for many births? सभी चारों ओर के बच्चों को बार This is why Bab Dada is repeatedly signaling all of you children इशारा दे रहे हैं everywhere अभी समय that the speed of time is now very अभी fast. समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। 2007 में कहा था और अभी तो प्रैक्टिकल Baba spoke this version in 2007. समय की रफ्तार जा रही है। You can now see the speed of इसलिए time. सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, Therefore, all of you children mustn't just become effort makers, पुरुषार्थ की प्रारब्ध का but you must become intense effort makers के अनुभव and experience the reward of effort over a long period of time now. की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई। Bab Dada has already told you earlier about the signs of intense effort. पहली बात, तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा। An intense effort maker will constantly be a master bestower. देवता नहीं देवता, He will not be one who takes, यह हो तो मेरा but be a deity, one who यह gives. करे तो मैं भी करूं, Not that you say, तो मैं बदलूं, if I have this, I can make यह effort. बदले यह करे। If this one does it, then I will also do it. If this one changes, then I will also change. सूक्ष्म This one should change. कराई, This one should do it. कराया कि तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा जाता है। Baba is saying as who is called intense effort makers. तीव्र पुरुषार्थ कभी भी ये नहीं कहेगा ये करे तो मैं करूं। An intense effort maker will never say this one will change, then only I will change. And these are not signs of a bestower. तीव्र पुरुषार्थ Whether someone does that or not, करे whether someone does that or not, समान करूं। I should continue to do it ब्रह्मा the same as Bab Dada, साकार में like Brahma Baba. बच्चे You also saw the Sakar form. He never said, if the children do it, बाबा ने then I will do it. मैं करके बच्चों से करवाऊं। It was always, I will do it and then make the children do it. दाता देना, So we have to be the giver, not the one who takes. समान बनना, कोई करे तो Have to become equal to Father Brahma. मैं खुद It isn't that if one does, then I will do, अच्छा। but I have to do it. दूसरी परिभाषा है, The second sign of intense effort is सदा निर्माण, to remain constantly humble, कार्य करते भी निर्माण, even while carrying out a constructive task. और निर्माण दोनों का बैलेंस, There has to be a balance of the two, और निर्माण का बैलेंस। being constructive and being humble. निर्माण बनकर कार्य Why? करने में सर्व When you carry out a task with humility, you receive love and blessings from everyone's heart. निर्माण बनकर कार्य करना, क्योंकि तभी सबके द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है जो पुरुषार्थ को तीव्र When you carry out a task with humility, दादा ने दी you receive love and blessings from everyone's heart. सेवा के क्षेत्र में आजकल Bab Dada has seen that in being constructive, that is on the field of service, everyone is now making new plans with a lot of zeal and enthusiasm. For this, Bab Dada is congratulating all of you children everywhere.
सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे Bab Dada has received many very good plans for constructive service. देखा However, यहाँ अंडरलाइन करने की जरूरत है what did Bab Dada see? देखा निर्माण के कार्य Where you have to बहुत underline? अच्छे Bab Dada saw that the constructive tasks में उमंग उत्साह are very good, उतना अगर निर्माण but to the extent that you have zeal and enthusiasm for service, स्थिति का बैलेंस हो तो if निर्माण you are just as much balanced with a stage of humility, then in the construction, that is in the task of service, दादा ने पहले there will be greater success in a more visible form. स्वभाव Bab Dada also told you earlier that you have to have a humble nature, संबंध to have humility in your words and in your speech करते हैं when you form relationships and connections with others. देवताओं के लिए तो कहते हैं उनके मुख से This is the praise of the deities, जैसे हीरे but in fact, it is the praise of Brahmins. मूल्य It is said of the deities वाणी that the words that emerge from their lips are like diamonds and pearls, निर्मल invaluable, अभी बाप pure and gentle words, a pure and gentle nature. Bab Dada is now examining you, and so he should give you the result, should he not? निर्मल वाणी Because this is the last turn of the season. इसमें Bab Dada saw that in your having pure words and humility in your stage, में अटेंशन more attention is needed. निर्मल वाणी निर्माण Pay attention to having pure words and humility in your stage. बाप दादा ने और क्या देखा अभी Further, what did Baba see? ये जमा है ये देखा बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो Bab Dada has already told you to accumulate in your 3 accounts रिजल्ट में of treasures. और कहाँ अंडरलाइन What did Baba see as a result? करा रहे हैं 3 What खाते are the 3 accounts? वह तो याद होगा ना You would have remembered them, कौन से would you not? शास्त्र द्वारा प्रारब्ध का Nevertheless, द्वारा पुण्य का Baba is now revising them हुए दुआओं का with your efforts. फिर भी रिवाइज Increase your account of accumulation. लेकिन रिवाइज करा रहे हैं एक ही अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ा With your efforts, increase your account of accumulation. स्वयं भी संतुष्ट रहे Remain constantly content yourself and make others content too. संस्कारों को जानते हुए भी Remain content संतुष्ट रहना and make others content while knowing the different sanskars. For by doing this, खाता जमा हो you are able to accumulate in your account of blessings. किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाए If for any reason तो there is something lacking in your making others content, it doesn't accumulate in your account of charity. संतुष्टता ही Contentment चाबी is the key to charity. रहना चाहे करना Whether it is to remain content yourself करना or to make others content. तीसरा है सेवा में सदा निस्वार्थ Thirdly, in doing service, always be altruistic. या मेरा होना Do not have any consciousness of I. मेरापन I did this or my name has to be mentioned. वहाँ पुण्य का Where there is any consciousness of I or mine in doing service, you are not able to accumulate in the account of charity. संतुष्ट रहना You are experienced in the consciousness of mine. और सेवा में निस्वार्थ मैंपन मेरापन नहीं इससे उससे पुण्य का खाता जमा हो Let there be no I and mine in doing service. मैंने किया या मेरा होना चाहिए ये मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहाँ पुण्य Where there is any consciousness of I or mine in doing service, मेरापन अनुभव you are not able to accumulate in the account of charity. हर एक अनुभवी है
You are experienced with the consciousness of mind. का भी मेरापन बहुत है, There is a lot of the consciousness of mind, मेरापन नहीं, लेकिन even in a royal way. मेरापन भी बहुत है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट The list of the royal forms से लंबी है। of the consciousness of mind रॉयल is even longer than the list of the ordinary forms जहाँ भी of the consciousness of mind. आ जाता है, Whenever there is a selfish motive of I or mine खाता and you are not altruistic, very little charity is accumulated in your account. सुनाई Baba will tell you about the list of mine सूक्ष्म है। at some other time. तो बाप It is very long and very अपने subtle. पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी So Baba Dada has seen that in your efforts, you are all accumulating in your accounts देना according to your own capacity. का तीनों खाते हर एक यथाशक्ति अपना However, कर रहे हैं। there is now a need to increase the account of blessings दुआओं का खाता and the account of charity. वह अभी भरने की आवश्यकता है, ये और जमा करने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन This is why there now has to be attention अभी भी दिखाई paid to accumulate in the three accounts. सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए, The variety of sanskars will be visible even now. के कमजोर स्वभाव No one's sanskars have become complete yet. भाव नहीं पड़ना However, now I must not be influenced by the weak nature or weak sanskars of others. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान I am a master with all powers, कमजोर संस्कार a master almighty authority. जो कमजोर संस्कार Weak sanskars are not powerful. मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार Weak sanskars नहीं। cannot influence me, a master almighty authority, सुंदर बात अभी बाबा one with all सेफ्टी powers. का साधन है बाप दादा की छत्र छाया। The means of safety is to stay सेफ्टी का under साधन है Bab Dada's canopy of protection. बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइन। Remain combined with Bab Dada. छत्र छाया की परिभाषा बाबा बता रहे Baba is saying the छाया में रहना माना definition of canopy of protection means remain combined with Bab Dada. श्रीमत ये है सेफ्टी। Canopy of protection is Srimad. जितना रहते उतना सेफ्टी है। The more you follow Srimad, the more you are under the canopy of protection. कि स्वप्रति Today Bab Dada is giving you a signal. को संकल्प बोध Each one of you definitely has to make a plan to bring about newness in your प्लान thoughts, words, connections, relationships and deeds. बनाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे। Bab Dada will first of all see the क्या result. पुराना संस्कार What newness have you brought about? किया, What old sanskar have you transformed with your क्या determination? सोचते हो, Bab Dada will first see this result. करे, What are you thinking? जो कहते करें। Should we do this? Should we? Raise your hands. नया प्लान Those who say that will बोल कर्म definitely do this. लाने का जरूर बनाना है। अच्छा करेंगे या दूसरे को देखेंगे? Acha, will you do it? Or will you look at others? करेंगे या दूसरे को देखेंगे? Will you do क्या it? करेंगे? Or will you look at others? नहीं देखना। What will you do? बाप दादा को Do not look at others. और देखना है तो किसको देखो? Look at Bab Dada. दादी को देखो। Look at your senior Dadi. कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज। She has such a lovely and detached बाप दादा stage. कहते हैं बाप अगर दादा इसको says, मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना है If someone wants to see someone who has finished the consciousness of I and limited mind, दादा के दिल
तख्त नशीन Then look at our Dadi Ji, who is seated on Bap Dada's heart throne. दिल तख्त नशीन दादी को Look at our Dadi Ji, who is seated on Bap Dada's heart throne. हद का मेरापन, In her whole हद life, का मैंपन इससे न्यारी रही। she has always been beyond any limited consciousness बीमारी of I or mine. And the result of that is, दर्द की no matter how ill she is beyond any feeling of pain. एक ही शब्द पक्का है, Just the one word is very firm. दादी कुछ दर्द है, If anyone asks Dadi, दादी कुछ हो रहा Dadi, do you feel any pain? क्या उत्तर मिलता? Dadi, is anything happening to you? What response do they receive? स्वार्थ It is nothing. बड़ी दिल बड़ी सर्व को It is समाने because she वाली, has been altruistic सर्व की प्यारी and has a big heart. प्रैक्टिकल निशानी, She has accommodated everyone and is loved by everyone. स्वार्थ और दिल बड़ी हर एक को समा लिया, Dadi accommodated everyone महसूसता नहीं and is loved by everyone. दुख दर्द से, सर्व को समाने वाली सर्व की प्यारी, इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। You are seeing the practical signs जब of ब्रह्मा that. बाप की बात कहते हैं, When people speak कहते of हैं, Father उसमें Brahma, बाप था ना, they say that the Father बाबा was के in लिए him. एग्जाम्पल देते तो बच्चे कहेंगे ब्रह्मा बाबा के साथ They तो tell शिव the बाबा example था। about Father Brahma. लेकिन Then दादी तो Father आपके was साथ in him. प्रभु पालना में रही, However, पढ़ाई में रही, Daddy was lived with you under God's sustenance बन सकता and this study. She निस्वार्थ has been your companion in doing service. आप सभी नहीं बन सकते। So if one can become that altruistic inner stage, then can all of you not become that? सकते हैं ना, You can become that. विश्वास Can you not? हमारे ऊपर बन सकते हो ना। Bap Dada has the faith that you are the ones बाप दादा who will को become निश्चय, that. Do you remember how many times you have become that? आप ही बनने वाले हैं, You have become like the Father. बनने वाले हैं, You have become like the बार Father. बने हैं, याद है? Do you remember how many times you have become समान that? बने हैं, You have become like the Father in many cycles, and even now you are the ones who are going to become that. Continue to fly with this zeal and enthusiasm. बाप को आप में निश्चय है, The Father has a faith in में you, सदा निश्चय बुद्धि so your intellects too ही है, must also have the faith that you are definitely going to become that. जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से Let your भी intellects ज्यादा have such faith and continue to fly. You have love for the Father प्यार में 100% in the subject of love. ज्यादा है, You say that you have more than 100% love. वह जो भी Is अपने that अपने right? स्थान पर सुन All of you sitting here देख and रहे all those of you वो सभी who are listening and seeing at your own places in the subject of love, do all of you consider 100% yourselves to have 100% love? जो समझते वो हाथ उठाओ, बाबा से प्यार 100%, Then raise your hands. तो सभी ने उठाया, 100%. Everyone raise their hands. Acha, those sitting at the back, raise your hands high. बाबा का हिलाओ। उस दिन डायमंड हॉल में 22,000 On that day in the Diamond Hall, more than 22,000 brothers and sisters have arrived. Baba said, all of you raised your hands for this. The sign of love is to become equal. होता है The one you love, बोलना, your speaking has to be like that once. उस जैसा Your way of moving and fulfilling the responsibility यह of relationships should be done in the same way. आज बाप दादा That is the sign of देखना love. चाहते हैं कि एक सेकंड Today, Bab Dada wants to see everyone now in a second to be able to be seated on the seat of self-sovereignty with the sanskars emerged of the controlling power and the ruling power. कि
कि एक सेकंड में स्वराज्य की सीट पर In a second, स्थिति में बैठना for है, 2 to 3 minutes, सीट पर कंट्रोलिंग become पावर, seated on a seat पावर of के a संस्कार में self-sovereign. इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हो। तो एक सेकंड में 2-3 मिनट के लिए भी In a second, for 2 to 3 minutes, सीट पर become seated on the seat of a self-sovereign. अच्छा, चारों ओर के बच्चों की याद प्यार के पत्र के साथ साथ Baba received love and remembrance through letters and all the facilities of science from all of you children everywhere. अपने दिल का Your love समाचार and remembrance have reached Bab Dada. Many children write and also tell the news of their hearts दादा उन to Bab Dada in their heart-to-heart conversations. की सदा Bab Dada is responding to all of those children. The Lord is always pleased with an honest heart. Bab Dada's love from his heart and blessings from his heart are especially for those souls. समाचार देते हैं, सभी अच्छे All of you who have given your news from everywhere उत्साह के प्लान and all the plans that you have made with very good zeal and enthusiasm, Bab Dada is congratulating you for those and is also giving you this blessing. बढ़ाते Continue to move forward and make others move forward. और के बाप दादा के Acha, फोटो में कोई में to all Bab Dada's children भाग्यवान who are the handful out of multi-millions विशेष and to the few most elevated, दादा सभी fortunate children of that हिम्मत handful, और उमंग उत्साह Bab Dada's special love and remembrance. आगे Bab Dada is giving congratulations to all the children पद्मा for their courage and zeal and enthusiasm. ब्लेसिंग भी दे रहे Baba is giving multi-million fold blessings का सितारा for the future too, for becoming an intense effort maker and keeping a balance. दुआएं Baba is also giving you the blessing that the star of fortune of all of you remains constantly sparkling देख भी and that you continue to increase the fortune of सभी others. चारों ओर के दूर All of you children everywhere at your own places are listening and seeing too. Baba is also seeing all of you children everywhere, even those sitting far away, and is pleased with you. Continue to see and constantly to increase the beauty of Madhuban. To all you children, Namaste with blessings from the heart. प्यार गुड मॉर्निंग We sweet children give our love and remembrance to the Father. Thank you, Baba. Thank you. अटेंशन Today's blessing, द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे may you become an image of attraction by increasing the shine of your soul conscious form with the oil of attention. स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले May you become an image of attraction by increasing the shine of your soul conscious form with the oil of attention. नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया Once the star of the soul conscious form has been made to shine by the Father with his knowledge, कुछ नहीं सकता it cannot be extinguished. चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकता However, the percentage of the shine can increase or reduce. सबको आकर्षित The shining star will attract everyone when you continue to pour the oil of attention into the lamp every day at Amrit Vela. तो वो एक रस When oil is poured into a lamp, से संपूर्ण
it remains constantly lit. बाप के To pay full सर्वगुण attention in this way means स्वयं to instill in yourself all the इसी Father's attention से virtues आकर्षण and powers. By paying such attention, स्लोगन है you will become an image of वैराग्य attraction. वृत्ति द्वारा Slogan: वैराग्य वृत्ति द्वारा have an attitude of साधना के unlimited बीज को disinterest प्रत्यक्ष करो and reveal the seed of spiritual endeavor. प्रत्यक्ष करो। आज का व्यक्त इशारा Today's स्वयं और Avyakt सर्व की signal. वृत्ति मनसा द्वारा योग की शक्ति होगा। Experiment on yourself and others with your mind उसके with the अंतर्गत powers योग of की yoga. शक्ति जमा करने के लिए In order to accumulate the power of जमा yoga, करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस increase your practice of the balance of karma कर्म करते and योग yoga की पावरफुल स्टेज रहे while performing actions. अभ्यास Let there be a powerful stage जैसे of सेवा yoga. के लिए इन्वेंशन करते Increase this वैसे practice. इन विशेष अनुभव के Just as you create inventions for doing service, in the same way, नवीनता ला करके make time for the practice of these special experiences, bring about newness, and become an example for everyone. सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनों Notice, शायद today is the third Sunday of the month, the day of for world meditation, when all Raj Yogi Tapasvi brothers and sisters have collective meditation from 6:30 p.m. to 7:30 p.m. प्रकृति At the time of having this special yoga, पवित्रता be stable in the powerful form of being a Master Almighty Authority. Give the rays of purity to all the elements as well as to souls, and do the service of making everyone and everything Satapradhan. ओम शांति। Om Shanti. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। Today is the World Meditation Day. सेवाधारी भाई बहनों का संगठित BK Colony 6 से 8 Sevadaris में रहेगा। will all be having a collective meditation in the meeting hall. ब्रजमोहन भाई जी के निमित्त सौगात दी जाएगी। On behalf of Brother Brijmohan, 6 बजे gifts will be given, and so वाले शांतिवन all the surrender brothers and sisters and all those who are in the trial 6 से 7:30 तक अंतर्राष्ट्रीय योग will have भाई बहनों का यहाँ yoga and will collect the gift. 7 बजे आपको सौगात दी जाएगी। समर्पित भाई बहनें अपने साथ स्मार्ट कार्ड और ट्रायल वाले भाई बहनें The surrender brothers and sisters have to get the smart card along with you all. राजयोगी ब्रजमोहन भाई जी के निमित्त कल 20 तारीख भोग का कार्यक्रम रहेगा। Tomorrow there will be the program of तो कल offering bhog to Baba सोल में on behalf of Brother उसके पश्चात Brijmohan. 11 बजे तक भाई साहब के साथ के संस्मरण सुनाए जाएंगे। मधुरवाणी ग्रुप एक गीत There will be the sharing of experience, आदरणीय Madhurvani group song, भोग लगेगा। उसके पश्चात and later we will be offering bhog to Baba. सभी बड़े डाइनिंग हॉल में ब्रह्मा भोजन स्वीकार And in the big dining hall, everyone will dine. कार्यक्रम 2025 का इस प्रकार रहेगा। Diwali occasion program of दिवस 2025. क्योंकि दिवाली सिर्फ हमारे लिए यज्ञ के लिए दिवाली नहीं है, ये यज्ञ का स्थापना दिवस होता है। Diwali is the program for the establishment of the Yajna. 21 अक्टूबर को दीपावली के दिन 21 October, सरोवर में सुबह Diwali program will be in Pandav Bhavan. लगेगा। पांडव Bhog will be offered after Murli class. सुबह मुरली क्लास के बाद सभी को 5 बड़ा पैकेट की टोली में 5 toli packets will be given. एक शांतिवन में कॉन्फ्रेंस हॉल में On 21st, लगेगा। सुबह there will be Diwali program in Shantivan सेंटर शिवमणि नरसिंह from 10 a.m. onwards. बीके कॉलोनी All those nearby places will be सभी भाई assembled. 21 तारीख को 10 बजे यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में दीपावली का कार्यक्रम रहेगा। 10 से 10:30 योग, 10:30 से 11 बजे 10:30 a.m. मधुरवाणी ग्रुप का गीत there will be class. दीपावली के निमित्त Then there will be Madhurvani group सुनेंगे। उसके song, बीके and कॉलोनी then सहित सभी भाई बहनों का ब्रह्म भोजन दीपावली के दिन 21 तारीख रहेगा। there will be Diwali 22 program तारीख को on 22nd. तो सुबह मुरली That is the new year. तीनों स्थानों After the Murli class in all the 3 places, सभी
सभी को बूंदी का लड्डू दिया जाएगा। That holy packets will be given. और 23 तारीख भाई दूज है। On 23rd there will be Bhai Dooj. स्थानों पर भाई दूज का तिलक लगाया जाएगा। The tilak will be applied in all the 3 places. इस प्रकार का 90वें यज्ञ स्थापना दिवस पर दीपावली का कार्य। We are celebrating the 90th Diwali program. अभी 2 मिनट बाबा की। Now 2 minutes we will sit in Baba's remembrance. दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कैसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। सत्य क्या है? What is truth? सीख जाते हैं तो In असुर thought, आत्मा when we look असुर deeply, निज सत्य स्वरूप है। the real self is the embodiment of truth, चैतन्य है ना, the living being. क्या है? This is the truth. देह संबंध दुनिया में But what happens आत्मा से in worldly bodily relation? अमर है, The soul is immortal. छोड़ती धारण करती It है, leaves और सत्य the तक body and शक्ति adopts खिला another, yet the power of truth will be finished. शरीर में बैठे It has been finished in the soul. विकारी कर्म While बंधनों sitting in the बस body, it becomes trapped in the bondage of sinful actions के भी मजबूर हो करके स्वभाव और and संस्कार compiled भी by ऐसे its बन गए। habits. In this way, the आत्मा nature निर्जीव and सत्य sanskar has become in that same आत्मीय way. असुर थी,
The soul's original power of truth, which was present in the beginning, has now finished. Om